नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हां, मां नर्मदा का ओरिजिन पॉइंट उद्गम स्थल आपके अनूपपुर ज़िले से है। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है नर्मदा रिवर। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। चलिए आइए, आपका स्वागत है वीएम क्लासेस में। हम जो है अपनी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू रखते हैं। ईएसई मेंस की सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही थी। ये है हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास। फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा था। लेक्चर नंबर 09 है आईएएस मेंस का। क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के ऊपर, बोल रहा है फर्स्ट पार्ट, डेवलप एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर लॉस across a conical contraction of diameter d1 and d2 in a given length L for a laminar flow. Explain physical significance of equation. Physical significance of equation. And then moving ahead, if d1 is equal to 0.2 meter, d2 is equal to 0.4 meter, L is equal to 2 meter, the volume over any cross section may be considered to be uniform. Then after that, determine the convective acceleration and local acceleration where the diameter is 0.3 meter for number 1 contact inlet discharge of 0.3 meter cube per second. Number 2, discharge varying linearly from 0.3 meter cube per second to 0.6 meter cube per second over 2 seconds when time t is equal to 1 second. चलो
सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो नंबर ए पार्ट में से स्टार्टिंग करते हैं। और द कंडीशन ऑफ लेमिनार लो, आप लोग स्नैप ले लीजिएगा क्वेश्चन का। तो हमको फ्रिक्शन फैक्टर 64 अपॉन रेनॉल्ड पता होता है। यहाँ पे dx के लिए d1 माइनस d2 ओवर दी लेंथ इंटू x हो जाएगा, बहुत ही सिंपल वे में। तो हमारा क्या कहना चाहिए, आपका हेड लॉस विच इज एफ एल वी स्क्वायर अपॉन जी टी। So here it will becomes 64 upon Reynolds into LV square upon 2GT. So HL 64 mu PL upon GD square rho, and contact discharge की वैल्यू Q is equal to 5/4 D times square P। बॉडी का लेमिना किस तरह से लेंगे, ये आपका ट्रेपेजॉइडल शेप का। यहाँ से घुसेगा, एंट्री करेगा D1, यहाँ से D2, हमारा प्यारा सा एलिमेंट्री स्ट्रिप आएगी dx, पर्टिकुलरली लेंथ पे, x लेंथ पे, एंड सो लेंथ इज टू बी L। Alright, so here we have for the elemental ring. Now head loss is equal to 128 mu q L upon rho g pi times t4। इजी। तो हम जो है, जो एलिमेंटल के लिए हो जाएगा DHL इज इक्वल टू 128 म्यू क्यू टाइम्स ऑफ पाई रो जी। बाउंड्री कंडीशन लगा दो 0 से L। तो यहाँ पे हमारा ब्यूटीफुली हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to L dx ओवर दी d1 माइनस 2 अपॉन L टाइम्स ऑफ x रेज टू पावर 4। तो हियर HL क्या हो जाएगा, 128 म्यू क्यू L डिवीजन ओवर दी रो टाइम्स पाई जी इंटू 3 d1 माइनस d2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद द d2 अपॉन d1 की पावर -3 -1, जहाँ पे हमारे पास d1 की वैल्यू 0.2 एंड d2 की वैल्यू 0.4 है। तो dx हमारा 0.3 इक्वेशन में पुट ऑन करने से आ जाएगा। तो here after putting the values we have to get 0.3 is equal to 0.2 plus 0.4 minus 0.2 upon 2 multiplied the x. So x is equal to 1 meter. We have to get the value and also calculated the value pi/4 square. So here q is equal to 4q upon pi times t square.
Now, further moving ahead, the value u is equal to 4 times q division over the pi times of d1 plus d1 minus d2 upon L multiply with the x in the whole square. Now, फर्स्ट वन कंडीशन, डिस्चार्ज आपका बोल रहा है कांस्टेंट। डिस्चार्ज क्या बोल रहा है? कांस्टेंट। तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन is to be ax is equal to u times of del u upon del x. So here we have ax is equal to 4q divided by pi times of d1 plus d1 minus d2 upon L इंटू एक्स का होल स्क्वायर, d2 माइनस d1 क्योंकि यहाँ प्लस साइन लेके आए हैं, इंटू डेल यू ओवर दी डेल एक्स। तो फर्दर मूविंग अहेड, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू 4q अपॉन पाई d1 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस d2 माइनस d1 अपॉन एल d1 इंटू एक्स का होल क्यूब एंड द वैल्यू d2 minus d1 upon d1l x power minus 2. Okay, so we have put these value in the equation of acceleration. 4 division over the pi times of d1 multiplied with the 1 plus d2 minus d1 into x upon d1 times l पावर होल 5, 3 2 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद द माइनस का 2 इंटू d2 minus d1 upon d1 times l. Now here we have the values, d1 की वैल्यू 0.2 मीटर, d2 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 0.4 मीटर, डिस्चार्ज 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, x की वैल्यू 1 यूनिटी, so here ax is equal to minus 12 meter per second square. All right, now moving towards the second portion is to be q is equal to 0.3 plus 0.6 minus 0.3 divided by multiply with the t. So here it comes the discharge 0.3 plus 0.15 t. T is equal to 1 second. So moving onwards, the discharge Q is equal to 0.045 meter cube per second. Now the dx is equal to d1 d2 minus d1 divided by per unit length into x. So the dx is equal to 0.2 plus 0.1 times of x. Q is equal to 4q over the pi dx square. Now on the downside, u is equal to 4 times of 0.3 plus 0.15 t divided by
pi into zero point 0.2 plus zero point 0.1 into x. So here we have to get the value of the velocity 9.55, 1 plus zero point 0.5 times of t divided by 1 plus 0.5 x ka whole square. Now the conditions we have for the total acceleration, कन्वेक्टिव और लोकल का मिक्सचर होता है, वो क्या होता है u टाइम्स ऑफ डेल u बाई डेल x प्लस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपका जो है u जो है वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होगा वो कन्वेक्टिव होगा और रिमेनिंग वाला जो है आपका जो है लोकल होगा। ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 9.55 1 प्लस 0.5 t अपॉन 1 प्लस 0.5 एक्स स्क्वायर इंटू 9.55 इंटू 1 प्लस 0.57 माइनस 2 इंटू 0.5 अपॉन 1 प्लस 0.5 x cube. Now remaining value is to be 9.55 upon 1 plus 0.5x whole square into 2.5. The final value is to be at boundary condition रख दो, x is equal to 1 meter and t is equal to 1 second. तो हमको जो है ना टोटल जो एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाएगा 24.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एलसी आप लोग जो है निकाल के ही रखा करिए, बहुत जरूरी है ना। ओके, डन हो गया क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते। क्वेश्चन है द पॉपुलेशन of a city the population of a city is 88 lakh 800 123 and is to be supplied with water from a reservoir. Supplied with water from a reservoir 6.4 kilometer away. Water is to be supplied. Water is to be supplied at the rate of 140 liters per head per head per day and half the supply and half the supply
is to be delivered is to be delivered in 8 hours. The full supply the full supply level of the reservoir is level of the reservoir is reservoir level 180 and its lowest water level is RL 105. The the delivery end of the main is at RL 22.5 and the the head required is 12 meter. Find the diameter of pipe. Find the diameter of pipe. यहाँ पे आप ले सकते हैं फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू टेक F इज इक्वल टू 0.04. इसे सॉल्व करना है. एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पूरा. द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 8 lakh एंड इज टू बी सप्लाइड विद वाटर फ्रॉम अ रिजर्वायर is 6.4 kilometer away. Water is to be supplied at the rate of 140 liters per head per day and half the supply is to be delivered in 8 hours. The full supply level of the reservoir is reservoir level 180.00 and its lowest water level in is RL 105.00. The delivery end of the main is at RL 22.5 and head required is 12 meter. Find the diameter of the pipe और friction factor F जो लेना है 0.04. So we have to solve it down. चलो सॉल्व करते हैं हम. तो टोटल डेली सप्लाई देख लेते हैं. टोटल डेली सप्लाई is equal to 8 lakh 140 into raised to power minus 3. So it is 11.2 into 10 raised to power 4 मीटर क्यूब. 8 आवर में कितना सप्लाई डिलीवर होगा. तो द 11.2 into 10 raised to power 4 upon 2. So it would become 5.6 into 10 raised to power of 4 meter cube. Now discharge Q. Discharge Q क्या हो जाएगा हमारा प्यारा सा 5.6 into
10 raised to power 4 upon 8 multiply with the 16 to 60. So it becomes 1.94 meter cube per second. Now, now head available when the reservoir is full. पहला कंडीशन बोल रहा है आपका when the reservoir is full, the head available क्या हो जाएगा हमारा 180 minus 22 and a half minus 12. So value is to be 145.5 meter. Now moving next ahead to neglecting the minor loss. तो मेजर लॉस क्या हो जाएगा आपका हेड डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर FLV स्क्वायर बाई 2GD. मेजर लॉस तो देखेंगे तो हियर वेलोसिटी की वैल्यू हम रख सकते हैं क्या 4Q अपॉन 5 टाइम्स डी स्क्वायर. ये वाली वैल्यू रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा प्यारा सा यहाँ पे मिलेगा इक्वेशन हो जाएगी 145.5 FL बाई जी 3 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 5 बाई 4 स्क्वायर इंटू D4. तो डायरेक्टली हमको D की वैल्यू टोटली पुट ऑन करने के बाद कैसे से सॉल्व करोगे आप लोग तो आपको 0.886 मीटर प्राप्त होगी. नाउ बी पार्ट में देख लेते फॉर द लोएस्ट लेवल इन हमारा तलवा में मतलब कि रिजर्वायर में वे जहाँ पे हेड हो जाएगा 105 minus 22 and a half minus 12. So it will becomes 70.5. Now again जो है नेगलेक्ट करेंगे माइनर लॉस. तो ऑन दैट कॉन्ट्रडिक्टिंग कंडीशन ओनली मेजर लॉस लेंगे तो FLV स्क्वायर बाई 2GD हमें पता है. तो यहाँ से FLQ स्क्वायर वाला फॉर्मूला लेंगे विदाउट P के 2G इंटू 5/4 का स्क्वायर इंटू T5. So यहाँ से easy after solving the whole data we have 1.025 मीटर आ जाएगी वैल्यू. आपको क्या रखना है F की वैल्यू 0.04 6.4 इंटू 10 क्यूब L जो है किलोमीटर में है 1.94 डिस्चार्ज स्क्वायर 2 इंटू 9.81 मल्टीप्लाई विथ 5/4 का स्क्वायर इंटू 70.5 का पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमको फाइनली हमारा डायमीटर मिल जाएगा. 5 डायमीटर 1.025 मीटर एडॉप्टेड जो कि जो है ना लार्जर डायमीटर देन रिक्वायर्ड व्हेन द रिजर्वायर हैज़ अ वाटर लेवल ऑफ फ्यूल सप्लाई लेवल. तो लेस लॉस होगा हमारे हेड में. ठीक है चलिए
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं छुटका सा। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एक्सप्रेशन फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ हेड लॉस एक्सप्रेशन ऑफ head loss in a pipe with side tapping. Side tapping. Okay. तो डायग्राम के लिए जो है हम एक रेफरेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एंट्री क्यू नॉट आपका जो है नाउ टैपिंग्स जो है मतलब कि चारों तरफ से रंध्र युक्त है। टिट 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 पूरा पाइप जो है खुला नजर आ रहा है। ओके, बीच में हमने एक स्ट्रिप डाली, dx उसकी लेंथ हो गई स्ट्रिप की, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द दिस पॉइंट हमारी डिस्टेंस क्या हो गई x, और होल लेंथ is to be L। ओके, नाउ फ्रिक्शन फैक्टर जो है अज्यूम कर लिए कांस्टेंट। सो हमारा डिस्चार्ज एट अ डिस्टेंस qx, डिस्चार्ज एट डिस्टेंस qx x डिस्टेंस पे हो जाएगा हमारा डिस्चार्ज qx इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू टाइम्स ऑफ x। नाउ फर्दर हमारी जो है ना फ्रिक्शन फैक्टर तो कांस्टेंट मान रहा है, तो आपका जो है हेड लॉस DHL क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 FL FQX स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर g टाइम्स d raised to power 5। Now on the boundary condition 0 to h DHL is equal to 8f upon pi square g times d5 into
इंटीग्रेशन 0 to L Q नॉट माइनस क्यू एक्स मल्टीप्लाई होल स्क्वायर dx. Now, the value of the HL is equal to 8 FL Q naught square upon pi square GD5 into 1 plus Q square L cube by 3 Q naught square minus QL divided by Q. So the entire discharge at the end of the section is drained off all over the length L. On this particular section, Qx is equal to Q naught minus Q times of L. So which gives the value 0 is equal to Q naught minus QL. The condition of small q is equal to Q naught divided by L. On this note, we have the head loss HL is equal to head loss is equal to 1/3 of 8 FL Q naught square upon pi square GD5. ऑलराइट, ये हमारी फाइनल कंडीशन आ जाएगी. ओके, यहाँ पे एक लाइन आप लोग लिख लीजिएगा. क्या? इफ entire discharge at the end section is drain over length L, entire length L. ठीक है. अब आपको एक काम करना है डियर साथियों. क्या काम करना है गुरुजी? आपको जो है ना पीएम क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करना है. और जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए. थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे.